Jai Guruji. Shukrana to Guruji. Guruji Bhulchuk Maaf. Here is the synopsis from last week. We read chapter 30, which sums up Brahmaji narrating to Narada about the situation which made Sati regret her going to her dad's place. So her dad humiliated her to an extent, as well as Rudra, to an extent that she decides there itself to cast off her body into the fire. She became silent and entered the yogic trance. In that, she was able to lift the Vayu. Vayu, we say wind. Udan, that's its name. So she was able to lift wind Udan from her umbilical region and brought it up in the center of her eyebrows. She was able to retain the pure wind, and her desire to sacrifice her body into that fire, her body fell into the yogic fire. She was turned to ashes, her sinless body, and seeing that, the witnesses were surprised and they were fearful. They were fearful of just with the thought, what's its outcome is going to be now. So this seeing Sati sacrificed herself and turning into ashes made the Shivgans. If you remember, there were 60,000 Shivgans who had accompanied Sati to Daksha's place. So they got really, really furious, really angry that they took out their weapons and went ahead to kill Daksha. Almost 20,000 of the Shivgans were stricken excessively with grief to an extent that they killed themselves. They sacrificed themselves in the same fire. They cut their bodies, and they just couldn't take it. And the others went ahead to kill Daksha, seeing that there was a Maharishi who was present at that time in that yajna, and his name was Bhrigu. So he chanted some mantras and he poured offerings into the fire, and there the thousands of demons arose to fight with those Shivgans. So there was a big fight that had happened, but a lot of destruction happened. A lot of Shivgans were killed in that fight. And then a lot of them were forcibly removed from there. They were forced to run. Seeing the plight of these Shivgans' destruction, many sensible devas, including Vishnu, they were agitated on pondering over just on that result, which they didn't knew yet what it is going to be. So this was the synopsis from our last week. Today we would be reading chapter 31, and our English reader is Rinki Auntie and our Hindi reader is Ajay Uncle. Jai Guruji, if anybody wants to read Shivpuran, we read it in Hindi and English, please come forward. You can contact Seema Auntie, Mansi Auntie, or myself. Thank you. Jai Guruji. Jai Guruji. Today I will read chapter 31. Brahma said, O excellent sage, in the meantime a celestial voice arose. Even as Daksha, the Devas and the others were listening, the celestial voice said, O Daksha, of evil conduct, of haughty disposition, what is it that you have foolishly done now, this misdeed bringing in many an unhappy calamity in its wake? You never gave any credence to the words of the Dichi, the king of devotees of Shiva. O fool, if it had been carried out, everything would have been auspicious and pleasing. After cursing you terribly, the Brahman had walked out of the sacrificial hall in protest. Still you did not understand anything, fool that you were.
How is it that you did not honor Sati, your daughter, the auspicious lady who herself came to your house? O you weak in knowledge, how is it that you did not worship Sati and Shiva in vain? Do you feel proud of being Brahma's son? You are actually deluded. The Sati alone, who quells all sins, who is the mother of three worlds, who has occupied half the body of Shiva and who confers all welfare, should be propitiated always. That Sati alone, when worshipped forever, confers good fortunes. She is a great goddess who bestows everything auspicious on the devotees. Thus, that Sati alone, when propitiated forever, destroys the fear from worldly existence. She is the goddess who confers what we desire and who removes all disorders. That Sati alone, when propitiated for ever bestows fame and wealth. She is a great goddess who confers worldly pleasures and salvation. That Sati alone is the creator of the universe, the protectress of the universe, the cause of destruction of the universe at the end of the Kalpa. She is a primordial Shakti. That Sati alone is the Maya of the universe, the mother of Vishnu of diverse shining features and the mother of Brahma, Indra, the moon, the fire, the sun and the Devas. That Sati alone is the bestower of the fruits of penance, charitable gifts and virtuous actions. She is the Shakti of Shiva, the great goddess, the destroyer of the wicked and the greatest of the great. The due share has not been offered by you who are foolish and evil-minded to the Lord, whose ever-beloved wife is the goddess Sati of such glorious features. Shiva indeed is the great Lord, the Lord of the all, greatest of the great, worthy of being served by Vishnu, Brahma and others, and the cause of all welfare. Penances are performed by the Siddhas who desire to have a vision of him. Yogic meditations and exercises are performed by yogins who desire to have a vision of him. Vision of Shiva yields great fruits, endless wealth, and food drains and the fructification of all sacrifices. Shiva alone is the creator of the universe, the Lord of all lords, the upholder of the primordial learning and the Lord, the most auspicious of the auspicious. Since you have not duly respected his Shakti and since you are wicked, this sacrifice will definitely be destroyed. Inauspicious results befall one when those worthy of worship are not worshipped, and they are quelled when they are worshipped, since Shiva is the worthiest of all worship. That Shakti is Shiva, Sati, the dust from whose feet is worn every day by Shesha with his 1,000 heads. Sati is a beloved of Shiva by meditating upon whose lotus-like feet forever and by worshipping which Vishnu attained his Vishnuhood. Sati is a beloved of Shiva by meditating upon whose lotus-like feet forever and by worshipping which Brahma attained his Brahmahood. Shiva is a lord by meditating upon whose lotus-like feet forever and by worshipping which the guardians of quarters, Indra and other attained their respective positions. Shiva is the father of the universe. That Sati is the mother of the universe. O fool, they were not honored duly by you. How can you attain welfare? Since Sati and Shiva are not propitiated by you, misfortune has befallen you. Miseries have attacked you. Do you feel proud enough to suppose that you can attain welfare without worshipping Shiva? That haughty pride will be crushed today. I do not see anyone among these devas who will come to your assistance, since you are averse to the Lord. If the devas were to come to your assistance, they are sure to be destroyed like moths by fire. Let your face burn, let your sacrifice be quashed. Whoever comes as your assistant, let him be burnt today, immediately. An oath on all the devas for your inauspiciousness if they are to assist your wickedness. Let all the devas depart quickly from this sacrificial altar, otherwise all will perish today without an escape. Let all the sages, nagas and other leave this sacrifice, otherwise you will all perish today without an escape. O Vishnu, come out of this sacrificial platform quickly, otherwise you will perish today without an escape. O Brahma, come out of this sacrificial platform quickly, otherwise you will perish today by all means. Brahma said. After saying this to those who had gathered in the sacrificial hall, the celestial voice that conferred welfare stopped. O dear one, on hearing the astral voice, Vishnu and other devas were surprised. The sages too were wonderstruck.
That's the end of chapter 31. Now Ajay uncle will read in Hindi. Jai Guruji. जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी, आपने मुझे मौका दिया पवित्र महाशिवपुराण का अध्याय 31 पढ़ने के लिए। जय गुरु जी। आकाशवाणी द्वारा दक्ष की भर्त्सना, उनके विनाश की सूचना तथा समस्त देवताओं को यज्ञ मंडप से निकल जाने की प्रेरणा। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनीश्वर, इसी बीच में वहां दक्ष तथा देवता आदि के सुनते हुए आकाशवाणी ने यह यथार्थ बात कही। रे रे दुराचारी दक्ष, ओ दंभाचार परायण महामूढ़, यह तूने कैसा अनर्थकारी कर्म कर डाला। ओ मूर्ख, शिव भक्तराज दधीची के कथन को भी तूने प्रामाणिक नहीं माना। तेरे लिए सब प्रकार से आनंददायक और मंगलकारी था। वे ब्राह्मण देवता तुझे दुस्साहस शाप देकर तेरी यज्ञशाला से निकल गए, तो भी तुझ मूढ़ ने अपने मन में कुछ भी नहीं समझा। उसके बाद तेरे घर में मंगलमयी सती देवी स्वतः पधारी, जो तेरी अपनी ही पुत्री थी, किंतु तूने उनका भी परम आदर नहीं किया। ऐसा क्यों हुआ? ज्ञान दुर्लभ दक्ष, तूने सती और महादेव जी की पूजा नहीं की। यह क्या किया? मैं ब्रह्मा जी का बेटा हूँ ऐसा समझकर तू व्यर्थ ही घमंड में भरा रहता है और इसलिए तुझ पर मोह आ गया है। वे सती देवी ही सत्पुरुषों की आराध्य देवी है तथा सदा आराधना करने के योग्य है। वे समस्त पुण्यों का फल देने वाली, तीनों लोकों की माता, कल्याण स्वरूपा और भगवान शंकर के आधे अंग में निवास करने वाली हैं। वे सती देवी ही पूजित होने पर सदा संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली हैं। वे ही महेश्वर की शक्ति हैं और अपने भक्तों को सब प्रकार के मंगल देती हैं। वे सती देवी ही पूजित होने पर सदा संसार का भय दूर करती है, मनोवांछित फल देती है तथा वे ही समस्त उपद्रवों को नष्ट करने वाली देवी हैं। वे सती ही सदा पूजित होने पर कीर्ति और संपत्ति प्रदान करती हैं। वे ही पराशक्ति और भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली परमेश्वरी हैं। वे सती ही जगत को जन्म देने वाली माता, जगत की रक्षा करने वाली अनादि शक्ति और प्रलय काल में जगत का संहार करने वाली हैं। वे जगन माता सती ही भगवान विष्णु की माता रूप से सुशोभित होने वाली तथा ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र, अग्नि एवं सूर्यदेव के आदि की जननी मानी गई है। वे सती ही तप, धर्म और दान आदि का फल देने वाली है। वे ही शंभु शक्ति महादेवी हैं तथा दुष्टों का हनन करने वाली परात्पर शक्ति है। ऐसी ही महिमा वाली सती देवी, जिनकी सदा प्रिय धर्म पत्नी है, उन भगवान महादेव को तूने यज्ञ में भाग नहीं दिया। अरे तू कैसा मूढ़ और कुविचारी है। भगवान शिव ही सबके स्वामी तथा परतपर परमेश्वर हैं। वे समस्त देवताओं के सम्यक सेव्य हैं और सबका कल्याण करने वाले हैं। इन्हीं के दर्शन की इच्छा से सिद्ध पुरुष तपस्या करते हैं और इन्हीं के साक्षात्कार की अभिलाषा मन में लेकर योगी लोग योग साधना में प्रवृत्त होते हैं। अनंत धन दान और यज्ञ आदि का सबसे महान फल यही बताया गया है कि भगवान शंकर का दर्शन सुलभ हो। शिव ही जगत का धारण पोषण करने वाले हैं। वे ही समस्त विद्याओं के पति एवं सब कुछ करने में समर्थ हैं। आदि विद्या के श्रेष्ठ स्वामी और समस्त मंगलों के मंगल भी वे ही हैं। दुष्ट दक्ष, तूने उनकी शक्ति का सत्कार नहीं किया, इसलिए इस यज्ञ का विनाश हो जाएगा। पूजने व्यक्तियों को पूजा न करने से अमंगल होता है। तूने परम पूज्य शिव स्वरूप सती का पूजन नहीं किया है। शेषनाग अपने सहस्त्र मस्तकों से प्रतिदिन प्रसन्नता पूर्वक जिनके चरणों को रस धारण करते हैं, उन्हीं भगवान शिव की शक्ति सती देवी थी। जिनके चरण कमलों का निरंतर ध्यान और सादर पूजन करके ब्रह्मा जी ब्राह्मत्व को प्राप्त हुए, उन्हीं भगवान शिव की प्रिय पत्नी सती देवी थी।
जिनके चरण कमलों का निरंतर ध्यान और सादर पूजन करके इंद्र आदि लोकपाल अपने अपने उत्तम पद को प्राप्त हुए, वे भगवान शिव संपूर्ण जगत के पिता हैं और शक्ति स्वरूपा सती देवी जगत की माता कही गई है। मूढ़ दक्ष, तूने उन माता पिता का सत्कार नहीं किया, फिर तेरा कल्याण कैसे होगा? तुझ पर दुर्भाग्य का आक्रमण हो गया है और विपत्तियां टूट पड़ी, क्योंकि तूने उन भवानी सती और भगवान शंकर की भक्ति भाव से आराधना नहीं की। कल्याणकारी शंभु का पूजन न करके भी मैं कल्याण का भागी हो सकता हूँ, यह तेरा कैसा गर्व है? वह दुर्वार गर्व आज नष्ट हो जाएगा। इन देवताओं में से कौन ऐसा है जो सर्वेश्वर शिव से विमुख होकर तेरी सहायता करेगा? मुझे तो ऐसा कोई देवता नहीं दिखाई देता। यदि देवता इस समय तेरी सहायता करेंगे तो जलती आग से खेलने वाले पतंगों के समान नष्ट हो जाएंगे। आज तेरा मुंह जल जाए, तेरे यज्ञ का नाश हो जाए और जितने तेरे सहायक हैं वे भी आज शीघ्र ही जल मरे। इस दुरात्मा दक्ष की जो सहायता करने वाले हैं, उन समस्त देवताओं के लिए आज शपथ है, वे तेरे अमंगल के लिए ही तेरी सहायता से विरत हो जाएं। समस्त देवता आज इस यज्ञ मंडप से निकलकर अपने अपने स्थानकों को चले जाएं, अन्यथा सब लोगों को सब प्रकार से नाश हो जाएगा। अन्य सब मुनि और नाग आदि भी इस यज्ञ से निकल जाए, अन्यथा आज सब लोगों का सर्वथा नाश हो जाएगा। श्री हरे और विधात, आप लोग भी इस यज्ञ मंडप से शीघ्र निकल जाइए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, संपूर्ण यज्ञशाला में बैठे हुए लोगों से ऐसा कहकर सबका कल्याण करने वाली वह आकाशवाणी मौन हो गई। यहीं पर ही अध्याय 31 समाप्त होता है। आज की रीडिंग यहाँ तक है और मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर कोई मैंने गलती की। जय गुरु जी, शुक्राना।